मालूम के तू नहीं पेकी बोली कोले तू अमार को गाली एने गाली दिए तो सफा रखिए ना, साफ सुथरा रखने से तो यहाँ का आदमी बीमार हजम नहीं होगा। What you can see here are the tons of trash disposed in the river. As you can see to my right, the tons of trash and garbage disposed near the river. Right now we are here at Barapani River. Yes, our river is polluted with sewage, with cocktail of plastic and agricultural sewage. And it's putting both public health and nature at risk. It's so upsetting that our river looks so clean, but clearly it's not. Who is responsible for that? There's many rivers on earth. According to the various sources, the number range from 2.5 to 4 billion. Throughout the history of the mankind, rivers have been source of life and prosperity. But the rapid activity of the man led to the river contamination that brings disease, death and imbalance of our ecosystem. मालूम के तू नहीं पेकी बोली कोले तू अमार को गाली एने गाली दिए तू अपना रास्ता नहीं अपना का तू नदी नहीं अमार तू नदी तू सबका नदी आसे नदियों ते पहला से केले कोई से बोली अमार को गाली दे गाड़ी जो अभी गाड़ी और गोई किने एने का पहला कने गोई जाए कचरा यहाँ में इसी में आके फेंकता है, गाड़ी से भी आने से यहीं फेंकता है और मना करने से भी मानता नहीं है। तो यहाँ का आदमी लोग यहाँ में जाके नदी में फेंकता है। हम लोग तो मना करता है नदी में मत फेंकिए बोल के ना, लेकिन यहाँ में बोलने से हमारा लोग कभी कभी बोलता है ना ऐसा मत फेंकिए बोल के, वो आदमी लोग मानता नहीं। बोलने से बोलता है कुछ नहीं ना नदी में फेंक देता है, कुछ नहीं होगा, ये तो नदी में ही चला जाएगा, ऐसा है। अभी उपाय नहीं है, रात को आके सब आदमी लोग पानी नदी में इसमें फेंक देते हैं, गाड़ी में नहीं फेंके। जितना ये बिल्डिंग वाला लोग है सब लोग तो पीछे आएगा गाड़ी से यहाँ से फेंकेगा ऊपर से नदी में। ये देखिए रस्सी में भी कितना ये सारा लटक के बेचता है, ये जो आपका ये केबल तार है। लोग ये घर से जो कचरा निकलता है सब इधर ही फेंकता है, वो दारू का बोतल भी फेंकता है, आपका जैसे भी हो वो पोल्यूशन करने वाला वही चीज इसमें फेंकता है। इसमें तो बहुत कंप्लेन होता है ना, बीमारी भी फैल सकता है। Hello, you're watching the Netwrork connecting state in one news. I'm Atar Bengia. Human activities are the main causes of destruction of water body. A lot of human activities or practice can cause destruction of water bodies such as rivers, the lake, lagoon, groundwater and the sea. The World Health Organization says that unclean water causes 4% of death in the world and 6% of illness including typhoid, cholera, dysentery. Disposal of whole lot of contaminated stuffs over here. So our river is polluted. These are not supposed to be dumped here. These are supposed to be dumped in a place where they are supposed to be dumped. Let me tell you, there are many people, there are many dwellers who dwell near the riverside over there. And if you are polluting the river and contaminating the river, it affects their health as well. ये वाला बच्चा लोग है जो नदी में जाता है नहाता है ना, वो लोग नहा के बीमार उमार हो गए तो उसको गवर्नमेंट थोड़ा ये कचरा को देखने से वो सबसे अच्छा बात है। सिर्फ यहाँ में सब गरीब वाला ही बिकता है आपका ना, इसको नीचे जितना है उसको बंगाली बस्ती बोलता है। वहाँ का बच्चा लोग भी जाता है वहीं पे नहाता है, वहाँ पे ही खेलता है दिन भर, लेकिन हमेशा कचरा में ही खेलते हैं। बीमारी बहुत होता है, बीमारी होता ही है। बीमारी क्यों ना हो, पानी इतना गंदा है, तो गंदा के लिए तो बीमार होगा ही, जरूर होगा। नदी को साफ रखिए क्योंकि हम लोग यहाँ का मछली भी मार के खाते हैं, तो यहाँ का जितना आदमी लोग है सब लोग यहाँ का मछली भी मार के खाते हैं। We cannot dispute the fact that our state is a fishing zone area. A lot of people go out for fishing here. Let me also add you the fact that the chemicals such as usage of DDT and other chemicals also affect the aquatic life, and the aquatic life really matters as they play a vital role in balancing our ecosystem. This report is really important in giving this message to the state government in a crystal clear that the way we have been managing and governing our rivers up till now is not acceptable. Too many rivers are failing good ecological health. This report is calling for dramatic change. Let's get the planning right and enforcement better.
It is also a message to the public that we need to develop a civic sense by not disposing the trash or the garbage near the river, as it affects the human health and also the aquatic animals. Let's keep our river clean, save environment for our future. Keep watching the network for more updates on the state.